Anandji is there. So I'll give you the brief intro about the Anandji. He is a IIT alumni, and he is the mind behind this product. And ये product इन्हीं का ही है. So uh, Anandji is please take ahead the call. All right. Thank you, Akshay. Good morning, everybody. First of all, thank you to Akshay for arranging this conference webinar. And let me tell you, the full credit goes to Akshay. So he has been after me to come up with this feature because he knows and he has been facing this issue regularly, and he is totally convinced that everybody in this group is facing similar problem. Correct. So the whole idea behind this feature is from Akshay, right? The full credit goes to him. All right. Thank you. Do you guys have any doubts about what problem we are solving? Anybody? All right, I'll go through the demo. We'll go through the demo first, We'll and go then through the demo. if someone have the doubts, Just one question. yeah. Sure. Before we start, you said that you log in every day. You generate the token without any problem, without our participation. Correct. So just want to ask, might be a simple question, but Yeah. what happens when the broker asks you to change the password? Because if you don't log in, how will we know that the password needs So to be changed? we on don't that? need password. We need API key and secret. Most of the broker provide you with API key and secret, which does not change. But they sometimes ask you your token generation system. Sometimes many of my brokers ask to enter the password again when you generate the token. That's why I was asking. Yeah. So if I think we will try to address that when we try to add, show you addition of broker. So if API key requires password, then if you change the password, you need to update that password in the system. So is there any system which will alert us? No, when the password is, we only find out when we actually go and generate the token. So it's a problem I have faced. That's why. So I'll show you. I'll show you the product, and in the product you will see if there is a credential fail. You will see an error out there. Okay. Yeah. Yeah. No problem. Yeah, I'll leave it to you. I just found a problem with this, so I asked. That's all. Yeah. Yeah. So we will try to address all these questions once we go through the product, right? Demo. Okay. If I can problem. give some examples of brokers that require password, just like Nuvama, Flat Trade, all these Trade Genie, these brokers requires password, ID and password both required while login. I mean token generation. Yeah, flat trade is also like configurable, right, Anandji? So whatever changes you do on the broker, right, you have to update it for basically API access. Okay. Right. So basically, let us go through the demo, and Yes. I think it will become more clear there. More clear. Your problem, half Yeah. of the query will be solved during the demo. So to start with, let's talk about this platform, the basic foundation of this product, right? So if you look at the product, on the left side you have a watch list, and on the right side you have a main panel, right? The whole purpose of this product is to manage multiple accounts from single interface, right? Now, how do you manage multiple accounts? So if you go to customers, the first thing you need to do to add is add customers from customer tab. So you can see there are multiple customers which are already added here, right? If you want to add a new customer, you click on plus button here. You can put a name here, client code, email is optional, right? Then you can select a group. So group is basically collection of accounts. Basically, it's basically for you to help you group broker accounts. So it can be like high net worth accounts or say high risk account, or in our case we have segregated by the broker type, right? Then you can have broker type
in the drop down, here you can select the broker. So right now we have integration for Motilal, Kotak, Angel One, Motilal through XTS, IFL through XTS, AC Agarwal, Zerodha, Grow, and Upstock. So we already have integration with XTS. So we will be adding 5 Paisa, R Money, Jainam, and a few more broker which support XTS. So this will be done this week itself. And if anyone have the other than this broker account, so you can request it, and we will getting the ad from the Anand's team. Yeah, so Akshay ji, हम एक वो form जो बनाया था, we'll share that form among Yeah, team, yeah, right? sure, sure, sure. And we will prioritize the broker which is needed most, Yes, yes, yes. right? Let's go to demo. Yeah. Yeah. So from here we can add broker account. So if you can see, we have right now added Kotak, Zerodha, Upstocks, right? These are the accounts which are being traded through Tradetron right now. Okay. So if there is any error when you add an account, you will see a triangle here. It will be yellow triangle which shows that credentials are invalid, right? But as if everything works fine, you will see something like this, where you will see basically token is generated. It will fetch margins, available margin from the broker. So if you see all these values, that means the token is generated, and you API can access your account. All right. In the group section, you have you can define group and club these customer broker accounts together. Now on the left side, you have a watch list from where you can basically search for instruments like Reliance or any options, future, whatever you want to, and add to the watch list. And from the watch list, you can buy sell that particular instrument. So buy sell. If you look at buy sell, it will open up a dialog where you can select all customers, or you can select group of customers, or you can select individual customer also to trade, right? And then you have a percentage of available margin field here, where you can define how much percentage of that script or instrument you want to trade in each account. So basically, the use of this is basically you don't have to remember the quantity which you want to trade in every account. The quantity will be calculated automatically in each account based on the margin available, right? Similarly, here you have fixed. If you want to trade fixed quantity, you can click on fixed and define quantity which you want to trade in all accounts. Now, basically, we have added all the broker account. Then you also have a portfolio where you can select a customer and see the positions and holding of each customers. So you don't have to log into your individual broker account to see holdings and positions. You can directly see it from here for all the customers. Right. Now let's go to Tradetron. So basically, from watch list, what you're doing is you're doing discretionary trades. Now let's go to the algo part where the Tradetron comes into the picture. Since we have already created customer accounts, added customer accounts, now when we go to Tradetron and click on accounts and try to add Tradetron account. So basically, when I click on plus button, on the top you will see details of Tradetron account. So Tradetron account, user email and password you use for login. And below here you will see all the accounts you added in customers. Is there any query till now? Because this is an important section we are addressing. If there's any query, we can go very slow here. Anand, one question. Pratik here. Yeah, Pratik. Because we are linking all our accounts to your system, right? Yeah. And you have all our information. I mean, every stock and everything. So, I mean, how secure is this? I mean, yeah. So are basically,
Will you Yeah, be so able I'll to? address this question first. It's a Some very of valid question, and I have the same question at the very first time when I had discussed with the Anand that this is a sensitive data for yeah. every user. So how is this secure? So Yeah. Anand, please go ahead. Yeah, so Pratik, it's a very valid question, and we have taken utmost care for this. So basically, first thing is the login password to your account to ProTrade is encrypted, so nobody can see it. Second thing is you have a separate database. Every account has a separate database. So if you see this oleander.protradedesk.com, so Oleander is a tenant basically. It's a separate database, right? Everybody will have a separate database. Then if you look at the password field in Tradetron account for Tradetron, this is also encrypted, right? Uh, I will show you here. Cancel. I clicked on edit. The password is not shown here, right? So password is stored in the database in an encrypted form, but to the visual eyes, it is not visible unless you are putting it here. All right. Okay. And access to database or server is very restricted. It happens through authentication code, which I have. And anyway, everything is encrypted. Password is encrypted, so it cannot be seen. Okay. Thank you. Does it answer your question? Yes. Yes. Thank you. Yeah. All right. So basically, you see here on the account section, I have done the mapping for Triton with all the broker accounts, right? So on the there's a column called platform, right? TT is Triton, right? So how do you do mapping? You click on plus. On top, you add credential of Triton account, and below you will see all the broker accounts which are added from the customer tab, right? So you know which Tradetron account will have which broker account, right? Added. So you will map it here. So you can select. So you add a broker account. You select accounts. So there can be multiple accounts in the same Tradetron, right? Multiple broker. So you can select all of them and click on add account. All right. I'll show you example also here. So you see, there's a this account nilesh at oleander at gmail.com. You have two accounts added, Naresh and Naman, right? One is Zerodha, other one is Kotak. So you can have so in Triton you can add one broker. So you have a single instance of one broker, right? So Kotak cannot be added twice. So you can have multiple broker like Kotak, Zerodha, Stock, Janam, right? So if all of them are in the same account, you can select all of them from here. All right. So this is how you do the mapping first. Right? The first thing you do is mapping your account with Triton on the platform, right? Every morning around 8 o'clock, there will be a script which will run, right? Which will see all these mapping and basically try to it will automatically generate token for all the broker accounts. So that these two important columns are important. One which are in green, right? The session status. So basically, active session status means your Triton login is correct, right? So system was able to log in into Triton, right, in the morning. And then you see broker token. Broker token, if this is green, right? If it is the timestamp is of today, which means the token has been generated for that broker, right? And other additional information you have basically like for that particular broker the number of positions in the trade ton are this much, I mean, right? 54 position for Oleander, Sumedh has 51 position, Niku has 37 position. These are the positions in the trade ton account, a cumulative in all the strategies, right? Then you have broker types here. Now, if we go to position analysis, this so account part you do once, right?
when you initiate, when you start the mapping. Then on a regular basis, you look at the position analysis part. Here you see you have basically important column is mismatch and strategy error. Mismatch is basically your mismatch between Tradetron. Anand, sorry to interrupt. Yeah, Some of the users are waiting to join. They are waiting for a room. So if you got any request, just approve them. yeah, done. Thanks. Yeah, yeah. Please continue. So this is the section. This is section position analysis, which you will regularly have a watch, right? So I'll also we are also adding a feature for notification, which will I'll come to later after basically explaining all this feature, this interface. So here you see two columns which are important: mismatch and strategy error. Mismatch is basically number of position which mismatch with Triton and broker account, right? So if there is any value here apart from zero, then you should look at it. What are the positions which are mismatching, right? Then you have a strategy error. Strategy error is when you get this error in any of the strategy in Triton. So that also is basically notified here. If there's any mismatch, you can click on the action and see what are the positions which are mismatching. So here in our case, we have zero positions in Tradetron, but there are some quantity which are there in broker, right? So I know these quantities I have taken manually. These are discretionary trades, so it is okay. So I will not do anything. If those were mismatches, which I did unintended mismatches, right? Tradetron had initiated something, but system had not taken that position, or system had taken extra position, right? So you will be able to square off those positions, these actions. Okay. Then there's another tab here, strategy error. You will be able to see the strategy in which error occurred for that particular broker. And then you can take appropriate action if you see this, it has to be rectified. And on the top, you will see how many accounts are there and how many, what are the mismatches. So one point I want to add here, guys. So suppose if you are running many strategies, or if you have the multiple accounts, okay. So in any of the account, in any of the strategy, even if the single strike price is mismatched with your broker account, you are easily identify that particular strike by clicking on that action button. And from this you can easily take a action, that suppose if that particular suppose let's say you are running a 10 strategies for, let's say, 10 different creator. It's not only related to only Patni capital strategy, but with any other creator strategy which you are running. So in any of the so like manually it's very difficult, you know to reconcile the positions of 10 different strategies. Okay. So here you will get in just one view, you can easily identify that which of the position or which of the strike is there on Tradetron and is not there on my broker, or vice versa, like it's there on my broker but not there in my Tradetron. Yeah. So that's the main problem which we are going to solve it. And also not only about the position mismatch, but in your 10 strategies, okay, in any of the strategy if there is the error, you will easily find here. And it's only about not one particular account. Even if you are managing a
10 different account, or the your multiple accounts of your family or your friends, or if you are a sub broker, like which you are managing multiple account, so that you can easily manage these account from just one view. Yeah, so if you have say multiple Tradetron account, and you might get a notification from Tradetron on WhatsApp, right? This strategy failed, but most of the account will have your single number, phone number, right? You will not know which Tradetron account the error was. So here you will be able to see which account, which strategy had an error, right? And also we plan to add a notification on your desktop and your mobile later on, maybe in a week or 2 weeks time, where you will be able to receive notification on your phone as well for any error or any mismatch. All right. So uh, others are basically on top. You will see how many accounts have mismatch. So basically, all the mismatch will come on the top. You'll be able to see very quickly what are the accounts which are in error or mismatch situation. Also, this is refreshed right now every 5 minutes. The sync happens every 5 minutes, which we thought was optimal, but it is configurable. Then if you want to sync manually, so you can do click by clicking sync button here on top right. Right, sync button is basically it will go fetch the data from your broker, and it will fetch the data from Tradetron and reconcile, right? So that happens automatically every 5 minutes. But if you want to do it when you see it, you can do it from here itself. Any questions till now? I Yes, think one question. I think we can take questions now. I want to add one point here. Okay, so the Premanand sir have one question that certain time Tradetron freezes, and in some extreme cases, if it's down for considerable time, what happens during the time? So basically, sir's question is ki, what if the Tradetron goes down? Ki, like last to last month, I think it's happened on the 2nd of April, that Tradetron is down. Okay, and for everyone, it's very difficult to manage their position, like which you have to exit. So even if the Tradetron down, okay, here directly, sir, can you show that part where we can see the portfolio of that particular client directly? So without login your particular broker account, directly you can see the positions of live position of your broker from this terminal. And you can exit all position from one You click. can exit the all position from here. So even if the Tradetron will be down, then you can manage your position directly from here. Most of the time, actually, what happens? Their interface is down, right? Yeah, Backend yeah. is working, Correct. right? Yes. Then in that case, you don't have to exit positions, but you can Correct. still see what are the positions you have from the portfolio, Correct. right? And in that scenario, also that mismatch interface will be very useful. This interface will be very useful. Ritik have some question. Ritik, please go ahead. सर लेट्स से जैसे ट्रेड टोन में ना हम एक ब्रोकर एक ही बार ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने अब स्टॉक्स ऐड करा तो वो एक बार होगा, नहीं तो उसके लिए फिर मेरे को दूसरी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी अगर मेरे पास दूसरा अकाउंट है अब स्टॉक्स का। Correct. ठीक है, तो वो मेरी एक एडिशनल कॉस्ट बन जाती है ट्रेड टोन के साथ। एंड अब आपका अकाउंट है, अभी आपने बोला कि हम अपने फैमिली के अकाउंट एक ही अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं, बट उससे पहले आपने बोला कि एक ब्रोकर एक ही बार ऐड होगा हमारे ब्रोकर हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो ये लिमिटेशन कैसे सोल्व होगी? नहीं, आप मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हो। इवन द अपस्टॉक का अभी जैसे ट्रेडट्रॉन अलाउड नहीं करता है कि एक एक ब्रोकर का एक अकाउंट में एक ही अकाउंट अलाउ करता है, बट यू कैन ऐड अ मल्टीपल अपस्टॉक अकाउंट इन दिस प्लेटफॉर्म। जैसे इफ यू से इसकी आपको कोटक कम से कम 8 7 से 8 बार दिख रहा होगा।
So you can add the multiple Kotak account, or like you can add multiple Zerodha account, multiple Upstock account, like that. मतलब हम एक ही अकाउंट से अपनी फैमिली के सारे अकाउंट जितने भी हैं मैनेज Correct. कर सकते हैं इससे। पूरा मैनेज कर सकते हो, यस। या ओके ओके इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कितने भी अकाउंट ऐड कर सकते हो आप। कितने भी ठीक है। अकाउंट ऐड कर सकते हो। Yeah, Matthew. Sir, Hello. I think I have understood most of the technical side, how you reconcile the broker and all that. But my question, two questions. One is my earlier question of the password. Let me just clarify that. Now, I have Finvacia, which is only one which generates token every day automatically without my input. So what happens is that I'll check Finvacia every day. The day I find that it is not generating a token is usually the day when I need to change the password. So they don't generate the token. You have to put in when I have to go, log in and change the password and come back and generate the token again. So that I think will apply to you also, wouldn't it? Yeah, Yes, so I think. if token is not generated, then you will have strategy error, right? That day. So what I mean is I still have to come to your platform every day morning and check that all the tokens are generated, right? So we will add a notification also, right, where you can receive a message on your phone. That is what I was asking about. We will need some sort of a notification. We'll add a notification in a week's or 2 weeks time, where you will receive a notification on the phone that whatever tokens have failed, you will be able to see which tokens have failed. Okay, so you will have to give us also see, in our case we also retry, right? It's not just it failed once and we stop, right? We try 3 times, right? So maybe it failed once, it fails twice, and third tries, and after 3 tries we will not try again, right? So it's high probability it will be basically generated. Right. So what I'm asking is that, so you will give us a notification so that we have to come and see that. So we will be adding that feature. Okay, that feature is essential, I think. Otherwise, 3 of my 6 brokers ask for a password every time I log in for a token generation. So, and they give only 90 days time for a password. After that, I have to regenerate the password anyway. Second question is the security. You said that the password, everything is encrypted. Yes. And kept. What I find that if I go to my Tradetron site, and if I can see the encrypted thing and all that, but if I just save it on my password becomes completely visible to me. If I just print out in my password generator, so it's a very simple method to get your password. So how the security, if it is visible in an encrypted form on the password side, I can actually get it. No, I did not get you. I mean, so basically here, if you see when you add a password in the accounts, when you add it, it will show you here. But when you edit, it will not show you the password. No, but I can take a printout with my password manager, and it will become, they will actually show me what the password is. Sir, that is the Google's functionality that you can see your password. But when you store in when the password is stored in the server now, it will be in the encrypted format. So no one can see your password, like even the admin of the particular server. Let me just clarify that one point, because these are the only 2 issues I have this one. Yeah. Okay. So if I go to my Angel One Tradetron account, and I see the MPIN is mentioned there, and it is shown in encrypted form. Okay. If I take a save on my password on the generator, I can't get it. I can't get the password on the password manager. See, password manager is your local thing, sir. Means the password manager is showing your password because you have saved it.
that will come only in browsers. I'm not very good with this. Yeah. It will come in the browser only. Yeah. That's fine. No problem. Yeah. Thanks. Yeah. Can I Rahul. ask a question? Yeah, sure. So, yeah, hi. Thank you for this webinar. I have a couple of questions. First one is कि हम algo and discretionary we can run parallelly on multiple accounts, right? Yes. Yeah. Okay. So, and second question is कि जब suppose if I'm running a discretionary strategy, तो मैं watch list से उसके trades I'll put in the trades. Later on, Tradetron का भी उसी अकाउंट पे काम चल रहा होगा और मेरा डिस्क्रिशनरी भी उसी टाइम पे चल रहा होगा, तो वहां पे हमेशा एक परमानेंट एरर दिखता रहेगा, राइट? और नॉट? हाँ, it will show you the error, right? अगर पोजीशन मिसमैच है परमानेंटली एक एरर दिखा रहेगा ना? हाँ, वो करेक्ट। एरर नहीं है, वो जस्ट आपका हाईलाइट कर रहा है कि वो आपके अकाउंट हाँ, हाईलाइट होगा कि position पोजीशन mismatch हमेशा है। मिसमैच है। हाँ। अच्छा, एक चीज और भी है, बट अगर एक्चुअली पोजीशन मिसमैच होगी तब वो पता नहीं चलेगा फिर उस केस में, राइट? तो आप देख सकते हो ना वहां से हर थोड़ी देर में कि सी आपको पोजीशंस दिखते हैं, ठीक है, मिसमैच वाले पोजीशंस दिखते हैं ओनली। तो आपको अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि कौन से आपने मैन्युअली इंटेंशनली पोजीशंस क्रिएट किए हैं और कौन से नहीं किए हैं, राइट? तो यू विल आइडेंटिफाई। उसमें अभी क्या हो रहा है ना, जैसे B2 के ट्रेड्स बहुत ज्यादा आते हैं। नहीं, जैसे मैं अभी प्रैक्टिकली आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या हुई, फिर मैंने अकाउंट अलग किए। सो जैसे आई रिसेंटली कपल ऑफ मंथ्स अगो सब्सक्राइब टू V2, तो V2 के कई बार ट्रेड्स बहुत ज्यादा होते हैं ड्यूरिंग द डे, मतलब सो उसमें क्या हो रहा था प्रॉब्लम कि मेरे को वो कंपेयर करने में मतलब उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कंपेयर उसी समय कर पाऊँ। एंड राइट नाउ आई एम रनिंग इट ऑन अ सिंगल अकाउंट। तो और अगर मेरे को जैसे आई वांट टू इंक्रीज इट टू 4 ऑफ अकाउंट्स इवेंचुअली, तो 4 अकाउंट में अगर मैं उसको इंक्रीज करता हूँ तो वो और दैट वुड बी द टाइम कंज्यूमिंग। सो एक्चुअली इट्स अ यूजफुल सॉफ्टवेयर टू स्केल इट अप जो आपने बनाया। बट इसमें डिस्क्रिशनरी, और अगर सपोज मैंने नॉन डिस्क्रिशनरी अपनी डिस्क्रिशनरी ट्रेड भी उसी टाइम पे उस पे इनपुट कर दिया तो मुझे वो एक्चुअली एरर नहीं दिखे। So again, I need to. Anand, can you go to Tradetron again? Yeah. Tradetron, click on Tradetron. हाँ, देखिए यहाँ पे अभी ये मंजू अकाउंट में 6 पोजीशन मिसमैच दिख रहे हैं, राइट? हाँ। तो this is not the error actually. This is it showing that position mismatch. तो हाँ, राइट, एब्सोल्युटली मिसमैच दिखेगा, बट वो ही है कि उसको मैच करना पड़ेगा। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि वो आइडेंटिफाई दैट कि व्हिच आर योर पोजीशन। राहुल, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, लेट मी एड्रेस इट। तो दो चीजें इसमें, एक तो यहाँ पे अगर ऑर्डर समरी में जाओगे आप तो यहाँ पे एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल है। करेक्ट, राइट? इंटरनल इज आल्सो वेरी गुड, जो भी सारे ट्रेड्स आप इस सॉफ्टवेयर से ले रहे हो। हाँ, ओके। और एक्सटर्नल में आपको दिखेंगे सारे एल्गो से जो ट्रेड हुए हैं या बाहर से, सिस्टम के बाहर से जो ट्रेड हुए हैं वो इसमें दिखेंगे आपको। ओके, तो वो एक्सटर्नल से दिखेंगे। हाँ, तो इससे आप एक फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट लगता है तो व्हाट वी कैन शो लेटर, अभी आई डोंट नो हाउ फास्ट वी विल डू, काफी लोगों की है, तो व्हाट वी कैन थिंक ऑफ इज वी कैन गिव यू अनदर सेक्शन हियर, यहाँ पे जो दिखा देगी आपको इंटरनल ट्रेड्स क्या लिए गए, इंटरनल ट्रेड्स क्या लिए गए, राइट? मतलब ये उन लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, फॉर एग्जांपल जो लोग दोनों ट्रेड्स एक ही टाइम पे एक अकाउंट पे करना चाह रहे हैं। सो अभी के लिए मैंने क्या किया कि मैंने जैसे V2 को एक अल्गो अकाउंट पे डाल दिया और मैंने अपनी जो पर्सनल ट्रेडिंग थी वो दूसरे अकाउंट पे इवेंचुअली शिफ्ट कर दी, बिकॉज मेरे लिए कोरिलेट करना मुश्किल हो रहा था in terms of P&L as well and all those things. So I found कि यार ये तो practically possible नहीं है during market hours. So better to have a different, because उसमें correlation करना easy हो जाता है। Tradetron पे देखा, वहां पे देखा, same position खड़ी है, it's done. But हाँ, अगर वो tab का होगा तो eventually हाँ, totally up to you कि हाँ वो कितने लोगों को वो same problem आती है and कैसे होता है। And second question एक ये था कि इससे मैं suppose from this software कि मैंने एक डिस्क्रिशनरी ट्रेड डाला, उसका भी मल्टीप्लायर मैं अपने आप अलग से कर सकता हूँ ऑल द अकाउंट। सपोज अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, नेक्स्ट सॉल्यूशन आई थिंक इज कि मैं 2 एप्लीकेशन ले लूं इवेंचुअली और 2 एप्लीकेशन से अलग अलग ट्रेडिंग करूं, तो मुझे मिसमैच का इशू नहीं रहेगा।
मतलब सपोज ट्रेडट्रॉन की स्ट्रैटेजीज एक एप्लीकेशन से रन हो रही है और डिस्क्रिशनरी में कॉपी ट्रेडिंग एक अलग एप्लीकेशन से कर रहा हूँ, तो वो अलग अलग हो जाएगा, राइट? या वो भी फिर भी वैसे ही रहेगा? डिस्क्रिशनरी सेम अकाउंट में कर रहे हो आप? अगर मैं सेम, एक्चुअली होता क्या है ना, बिकॉज 50-50 मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है हाँ, ठीक कैश है। और इसका, उस वजह से अकाउंट को सेपरेट करना उससे प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं रहा है। मतलब ठीक है। डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी में ना दोनों को प्रैक्टिकली मतलब स्केल पे, अभी तो कम कैपिटल पे तो आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट वंस व्हेन यू स्केल इट अप, तो वो फिर क्या होता है कि एक ही चीज को आप दो जगह आपको 50-50 डिवाइड करना पड़ेगा, कैश और नॉन कैश को। देयर इज टू कंपोनेंट्स अबाउट मार्जिन सेबी के ना, वन इज कैश, वन इज नॉन कैश, तो वो नहीं, उसका ठीक है। रेशियो एक मेंटेन करना पड़ता। So you So, want to do it in वो the उस same account, discretionary and हाँ non-discretionary, right? हाँ हमारी क्या प्रॉब्लम, वो हो हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम आपका क्या है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि स्ट्रेटजी में मिसमैच नहीं है, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, स्ट्रैटेजी में मिसमैच नहीं है। तो वन थिंग इज कि आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी एबल टू फिगर आउट इंटरनल में आपने क्या ट्रेड लिया है, राइट? राइट, कितने कितने ही स्ट्राइक लेंगे डिस्क्रिशनरी में? आप 2-3 ही स्ट्राइक लेंगे, 4 स्ट्राइक मतलब लेंगे, नहीं, 6 स्ट्राइक पांच लेंगे? पांच छह के आसपास मैक्सिमम होती है कई बार, हाँ, तो वो आपको अंदाजा मैक्सिमम इज होगा ही 5। कितना क्वांटिटी हाँ, आपका वो उसमें है। नजर रहता है, राइट? हाँ, नहीं मतलब आई टोटली गेट योर पॉइंट कि वो You can देख के identify. किया जा सकता है। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप दो दो विंडो खोल लो इसी की, राइट? एक में हाँ, आप ये वाला टैब खोल लो, क्या बोलते हैं, ऑर्डर राइट, समरी वाला टैब खोल लो, दूसरे में ट्रेडट्रॉन हाँ, वाला क्लिक कर लो। ट्रेडट्रॉन वाला ट्रैप खोल लो। आपको मिसमैच दिखे तो वहां पे क्लिक करो और देखो मिसमैच में कौन सी हाँ, स्ट्राइक है, और दूसरे वाले टैब में देख लो कि वो स्ट्राइक आपने डिस्क्रिशनरी लिया है क्या। बट अगर मैं दो सिस्टम से ट्रेडिंग डाल दूं कि एक से ट्रेडट्रॉन से बस ऑब्जर्व करता रहूं ट्रेडट्रॉन क्या डाल रहा है, मतलब आपकी एप्लीकेशन के दो सब्सक्रिप्शन करके, और एक से मैं सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग यूज करूं, हाउ अबाउट दैट? मतलब वो ज्यादा इजी नहीं होगा अगर मैं कॉस्टिंग को एक टाइम पे साइड रखता हूं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाउ एक डज ही इट सॉफ्टवेयर के, हाउ डज इट सॉल्व योर पर्पस? देखो अगर दो डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस होंगे, एक से मैं डिस्क्रिप्शन, सपोज एक लॉगिन आईडी आपने मुझे दिया 123, एक लॉगिन आईडी दिया 456, तो जिस लॉगिन आईडी से मैं 123 कर रहा हूँ, उसी लॉगिन आईडी, सपोज मैं लॉगिन आईडी 123 से डिस्क्रिशनरी के ट्रेड डाल रहा हूँ, तो उस एप्लीकेशन में तो सिर्फ डिस्क्रिशनरी ही दिखेगा ना मुझे? नहीं, दोनों दिखेगा ना इसमें। सी दोनों बेसिकली कैसे दिखेगा? हमारे ये सिस्टम में इफ यू आर कनेक्टेड टू द ब्रोकर, राइट, इट विल शो यू हाँ, ऑल द ट्रेड्स इन द योर ब्रोकर अच्छा, अकाउंट, ओके, राइट? गॉट इट। इंटरनल खाली अच्छा, जो दिखेगा। भी होगा तो हाँ, सी आप यहाँ से अदरवाइज पर्पस सॉल्व नहीं होता है ना अगर ये ब्रोकर से वापस सिंक सॉल्व नहीं नहीं होता, होता। राइट? सी राहुल, आपके जो भी डिस्क्रिशनरी रहेंगे ना, आप वो यहाँ से प्लेस करो ऑर्डर, मतलब प्रो ट्रेड डेस्क से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, जो जिसका भी आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपके इंटरनल राइट, में शो होंगे, और एक्सटर्नल में आपके जो एल्गो थ्रू एग्जीक्यूट हुए हैं वो आपको एक्सटर्नल में दिखेंगे। गॉट इट ना? तो इंटरनल मतलब राइट, जो आप डिस्क्रिशनरी कर रहे हो वो इंटरनल में शो होंगे, और एक्सटर्नल में एल्गोस वाले शो होंगे। ठीक है, नहीं, गॉट इट, मतलब हाँ, आई गेस वो काफी You पर्पस can वो सॉल्व कर identify. रहा है। Yeah, yeah. हाँ, मतलब वंस थिंग्स गोज लाइव ऑन मल्टीपल अकाउंट, शायद उसके बाद देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी टू गेट समथिंग, बिकॉज हाँ, वो प्रैक्टिकली जब कई बार प्रॉब्लम आती है तभी उसका सॉल्व। सेकेंड, एक सिक्योरिटी पे मेरा क्वेश्चन था अबाउट जर्नल एपीआई ओनली, कि आपके पास मेरे अकाउंट का, जैसे मैं एपीआई का पासवर्ड जाता है, आपके पास एक्सेस किस किस चीज का रहता है? आई गेस बस पोजीशंस देखने का, ट्रेड डालने का, राइट? यू कैन नॉट एक्सेस माय पर्सनल डिटेल्स, और कैन यू? Yeah, so I don't have access to your credentials, right? It's all encrypted, right? ओके, दूसरा है कि पोजीशंस भी मतलब बेसिकली विजुअली तो मैं देख ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपका पासवर्ड एन्क्रिप्टेड है। आई डोंट हैव योर पासवर्ड, राइट? नहीं, आप नहीं, मतलब सिस्टम में कुछ तो डेटा, मतलब सपोज मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, तो वो डेटा आपको नहीं दिख रहा होगा आई गेस, और एपीआई से वो भी आपको दिखता है। अनलेस आई गो इनटू द डेटाबेस, ट्राई टू फिगर आउट, तो मुझे दिखेगा, राइट? अदरवाइज विजुअली तो एपीआई के थ्रू नहीं देख सकता मैं, क्योंकि वो पासवर्ड आपका एन्क्रिप्टेड है प्रोट्रेड का। ओके, I cannot log in into your account. Rahul, Anand ji, what are the other things which you can see other than the positions? Like
हाँ बेसिकली राइट, व्हाट एग्जैक्टली एक्सेस क्या रहता है, मतलब चाहे वो ट्रेडट्रॉन हो, आपको चाहे एपीआई में एसपीएस हो, क्या चाहे क्या आप हो, एक्सेस मिलता है? एक्सेस किस एपीआई किस चीज का मिलता है? हमें एक्सेस किसी चीज का नहीं है एक्चुअली. आई कैन नॉट एक्सेस योर अकाउंट. आई डोंट हैव योर क्रेडेंशियल विद मी, राइट? So I ओके cannot access account. I cannot see visually. I cannot see anything, or even through API, right? ओके अगर मैं चाहूंगा और कोशिश करके कि भाई आपके डेटाबेस में लॉग इन करके देखना चाहूं तो देख सकता हूं, पॉसिबिलिटी है. बट दैट इज अ बट वेरी उसमें तो आपको ब्रोकर के पोर्टल पे जाना पड़ेगा ना, या आप अपने पोर्टल से देख सकते हो? मैं अपने पोर्टल पे देख सकता हूँ ना. ये पोजीशंस जो है, जो आपकी जो हाँ पोजीशंस है ऑर्डर समरी में, ये हाँ ये हमारे डेटाबेस में स्टोर होगी ना ये. हाँ, वो तो हो गई, उस पोजीशन से प्रॉब्लम नहीं है. इट्स हाँ, समथिंग कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, मेरा मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है, मेरा एड्रेस क्या रजिस्टर्ड है, क्या ये नहीं, सब डेटा भी एक्सेसिबल होता है? तो ये मार्जिन जो हमें दिखाना होता है, मार्जिन खाली पोर्टफोलियो के लिए दिखाना पड़ता है और ट्रेड करने के लिए दिखाना हाँ पड़ता है, हाँ, राइट? मार्जिन तो राइट. हाँ एड्रेस मोबाइल नंबर जो सेंसिटिव चीजें है, क्या आप ये देख हाँ सकते हो? नहीं, हाँ, विजुअली हम नहीं देख नॉमिनी सकते. और और ये जो आपका जो मार्जिन वगैरह भी है, वो भी एक जेसन फॉर्मेट में होता है, राइट? वो भी ऐसे ओके सिंपल सा नहीं स्टोर होता है, वो भी एक जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है. तो मतलब ओके. एज सच मतलब बहुत इजी नहीं है मेरे लिए देख पाना. देखिए, देखना चाहूंगा, मैं कुछ करना चाहूंगा तो कर लूंगा, बट इतना इजी नहीं है वो चीज़ करना. मार्जिन भी इतनी प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे लोगों को, मतलब पर्सनली मुझे होगी, बिकॉज मार्जिन तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा ना जब आप पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं. एग्जाम्पल, मतलब क्या एक आप मोबाइल जर्नल नंबर पता चल. ईमेल आईडी हाँ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, नॉमिनी. या मोबाइल नंबर आपका कहाँ इसमें यूज होता ही नहीं, होता है क्या यूज? मतलब आप ऐड नहीं करोगे, या ईमेल और ये सब ऑप्शनल है? नहीं 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 ईमेल वगैरह ऑप्शनल है, आप डालिए ही मत. नहीं, आपको हाँ ओके. ब्रोकर से फेच होता है क्या? ये सब चीजें हाँ ब्रोकर से फेच होती है क्या? मोबाइल नहीं, नंबर, ईमेल आईडी, हमें हमें एड्रेस, नहीं ये फेच सब? होता है. हमें हाँ, हमें खाली एपीआई की और सीक्रेट वगैरह जो चाहिए होता है, वो भेजना होता है सेशन क्रिएट करने के लिए, राइट. वो राइट? तो हाँ, एपीआई की का ही क्या क्या उसमें, सपोज मैं क्या सोच रहा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल. वो भेजते हैं सेशन क्रिएट करने के लिए. बाकी हम हाँ फेच कुछ नहीं करते, पोजीशंस के अलावा या ट्रेड करने के अलावा हम कुछ नहीं करते. नहीं, जैसे थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, वजीरेक्स में एक इशू आया था, अगर आपको ध्यान होगा ना, वजीरेक्स के अंदर हैकिंग हुई थी. एंड वजीरेक्स का जो पूल अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया क्रिप्टो के अंदर, वो हैकर्स ने हैक करके उसको ट्रांसफर कर लिया था. हाँ, तो सो वो, ये तो पॉसिबल है ही हाँ नहीं आपका. इसमें तो पॉसिबल है हाँ ही नहीं. वही चीज. तो वो तभी कर पाए क्योंकि एक तो मैंने पूल अकाउंट में पैसा डाला था. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि सपोज मेरा ब्रोकर जैसे कोटक है, तो कोटक के अगर वो पूल अकाउंट में घुस गए, तो कोटक इज लायबल फॉर इट एज पर सेबी, राइट? हाँ, क्योंकि कोटक एंड उसका सेबी का टाई अप है, तो कोटक इज लायबल फॉर इट बिकॉज इट इज अ रेगुलेटर. हेलो। बट वजीरेक्स का रेगुलेटर नहीं था, तो लोगों को पैसा मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुई. आई गेस कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला, मुझे उसका एग्जैक्ट अपडेट नहीं है, बट हैकर शायद इसीलिए घुस पाए थे राहुल, इसको इसको मैं एड्रेस करता हूँ दूसरे. वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म में. हम्म. तो इसमें क्या है, देखिए, आपका जो भी ब्रोकर अकाउंट है उसके साथ बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है, राइट? जो मनी का ट्रांसफर होगा आपके बैंक अकाउंट और ब्रोकर अकाउंट में होगा, और कहीं कहीं जा ही नहीं सकता. और कहीं राहुल, मनी रिलेटेड और सारे सेंसिटिव डेटा को एक्सेस नहीं रहेगा कोई भी प्लेटफॉर्म पर. हेलो, राहुल फ्री लग रहा है. आई थिंक. हाँ, Guys, या राहुल, एनी. सॉरी, मेरा नेटवर्क शायद था. तो राहुल, आप तो अक्षय जी बोल रहे थे और मैं भी वही बोल रहा हूँ कि बैंक अकाउंट रिलेटेड या मनी रिलेटेड एक्सेस कुछ नहीं होता हमें, या किसी को भी नहीं होगा. कुछ नहीं. इट इज बिटवीन योर ब्रोकर एंड योर बैंक. हाँ गॉट इट. ठीक. हाँ, वही मेजर वही क्वेश्चन था. बोल रहे कि एक्सेस है किन किन चीजों का एज एपीआई, बिकॉज ये बहुत कॉमन होता जा रहा है इवेंचुअली एपीआई का एंट्री देना. गॉट इट. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू अक्षय जी. थैंक यू. Anyone have any other queries, please? Yes, I have that. Yes. It is just I do not understand everything which Rahul said because my Hindi is not very good. I can understand most things. Okay, I think what he was asking is, what can you see if you want to? Am I right? Yes, yes.
Was that the question you was asking? Yeah. Was that the question? Correct. And what was the answer to that? The answer was, बेसिकली हाँ आप मैं बता देता हूँ अक्षय जी। तो इसमें क्रेडेंशियल वगैरह हम नहीं देख पाएंगे। हाँ बेसिकली जो ऑर्डर please in Can you English. speak in English, Anand. please? yes, so That is why the question is. yeah, Matthew. So we will not be able to see any of your credentials. We will be able to see the positions if we want to fetch, if we really want to see. So we can fetch what are the trades you have taken, right? But Okay. still, every tenant has a separate database, right? Right. So it is difficult to go and check individual database for trades. And honestly, there's not too much of purpose it will solve for us. Right. So you got to have access to the broker account to do your job, right? Without that, you can't do your job. So you have only access to the trade part. Is that right? Correct. Yes. Only That's- position part, not the sensitive data like email ID, phone number, And bank I account think details. Rahul's question was whether you can access other things if you want to. If somebody from your office or somebody from from your group wants to, that's a question. apart from this, we cannot access. So everything is encrypted, right? Okay, that's fine then. Yeah, I just did not understand that discussion. That's why I was asking. Thanks. Yeah, any एक और क्वेश्चन है मेरा, जो आपने सिक्योरिटी की बात करी, थोड़ा मेरे को सिक्योरिटी के बारे में बताओगे? बैकएंड पे आपने क्या कुछ इम्प्लीमेंट कर रखा है सिक्योरिटी के लिए? लाइक देयर आर सर्टिफिकेशंस जो आपको गवर्नमेंट से लेनी होती है, जैसे ISO 27001, ऐसे कुछ SSL होता है, तो उसमें आपने क्या कुछ इम्प्लीमेंट करा हुआ है, वो मेरे को एक बार थोड़ा गो थ्रू कर दो। सर हम लोग AWS सर्वर यूज करते हैं क्लाउड पे, और जो भी इनबिल्ट सिक्योरिटी आता है वो यूज करते हैं। बाकी जो भी आपका कम्युनिकेशन इंटरनेट पे होता है सब SSL के थ्रू होता है, तो एवरीथिंग इज एनक्रिप्टेड, राइट? एंड और जो भी क्लाउड का एक्सेस है, इट रिक्वायर्स पास कोड व्हिच इज ओनली एक्सेस आई हैव एक्सेस टू इट। ओके, राइट? तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेरी स्टैंडर्ड और अच्छा क्लाउड सर्वर यूज कर रहे हैं हम लोग। So I think most of the things are taken care. एंड दूसरी चीज जो आपने उसके लिए बताई, लाइक अब हमारा डेटा जो है API सीक्रेट की, वो आपके प्लेटफॉर्म पे भी स्टोर हो रहा है, जैसे ट्रेडट्रॉन पे स्टोर हो रहा है। नहीं, हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा ना आपका API की सीक्रेट की, अदरवाइज हम एक्सेस टोकन जनरेट कैसे करेंगे? वो ठीक है, आपके पास स्टोर हो रहा है। हाँ, आपका कोई इंटरनल टीम का जो भी बंदा है, क्या उसके पास भी एक्सेस है? आपके पास ही एक्सेस है? जब आप एक्सेस करना चाहोगे तभी कर पाओगे, क्योंकि एक्सेस तो हो सकता है इस चीज। अगर आप कह रहे हो कि एक्सेस सी डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक है, एक्सेस करने के लिए मेरा ऑथ कोड लगेगा। बिल्कुल। तो मतलब आपके अलावा और किसी के पास एक्सेस नहीं है ना। वी हैव टू बिलीव ओनली ऑन यू, बिकॉज़ हमें नहीं पता आपकी टीम पीछे कैसे क्या बैठी है। हाँ, तो you have see basically anything which is breached right on the platform, it is my responsibility. Okay. Right? So access को और security को we take as a high priority. बट आनंद जी, अगर ब्रीच हो भी गया तो भी तो कोई सेंसिटिव डेटा नहीं निकल सकता ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी। करेक्ट। अगर API डेटा का चला गया तो मैं ऋतिक का आंसर क्वेश्चन जो था उसको आंसर कर रहा था। There is no sensitive data. आप ट्रेडट्रॉन में भी डालते हो राइट, API की सीक्रेट की, राइट? हाँ, वही सेम चीज, राइट। सर एक चीज बताओ, लेट्स से किसी ने मेरी API की एंड जो भी सीक्रेट की ले ली, उसने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे डाल दी एंड वहां से ट्रेड इंप्लीमेंट हो गई, ब्रीच ही हुआ ना। ओह, लेट्स से मेरा ट्रेडट्रॉन पे डेटा है, ट्रेडट्रॉन का डेटा लीक हो गया। नहीं, एक बात सुनिए ना कि अभी देखिए, एक तो पहली चीज है कि आपका API की सीक्रेट की 2 ऐप से करेंगे तो दोनों अलग अलग होना चाहिए, राइट? मान लो सेम कॉपी करके वो कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो फेल होगा, किसी एक सिस्टम में तो फेल होगा ना।
ऋतिक, सपोज अगर आपका एपीआई की सीक्रेट की दूसरे प्लेटफॉर्म पे या दूसरे कोई जगह अगर कोई यूज करता है तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा वो। सर कई ब्रोकर्स अलाउ करते हैं दो जगह। अब लाइक आरमनी है, मैं यूज कर रहा हूँ, मैं आरमनी दो ट्रेडट्रॉन पे यूज कर रहा हूँ ओके। एंड दोनों जगह मेरा लॉगिन चल रहा है। उस केस में फिर ये तो मतलब ठीक है, सिक्योरिटी पे मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन था बिकॉज एज अ न्यू प्लेटफॉर्म नहीं नहीं नहीं, बिलीव करना मुश्किल है एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज आनंद ट्रेडट्रॉन जी, मैच्योरिटी इसके लिए अपने कुछ पास है। एक चीज बताइए कि ये तो बेसिकली जो एसएसएल में आपका डेटा एनीवे इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, राइट? तो बीच में हैक करके तो नहीं निकाल पाएगा कोई। सर इंक्रिप्शन का बट डिक्रिप्शन भी एक और होता है चीज ना। आनंद जी, आपको मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द सिक्योरिटीज इशू, सो मे बी मतलब यू शुड हैव लाइक मेरे सम को जो काइंड ऑफ मेरे एग्रीमेंट, और कि जो हाँ, एक हम एक एग्रीमेंट भी बना के दे देते हाँ हैं, ठीक है? करेक्ट। और वी विल ऑल्सो लिस्ट डाउन थिंग्स, प्रिकॉशंस विच आर वी टेकिंग फॉर सिक्योरिटी, राइट? वो भी एक लिस्ट डाउन कर देते हैं हम। बिकॉज एज फार एज आई नो, मतलब मेरा एक फ्रेंड सिक्योरिटी में है तो कुछ चीजें पता रहती है, लाइक सर्टिफिकेशंस जो होती हैं जो कि जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है, कुछ एक सर्टिफिकेशन जो कि मैंडेटरी होती है, लाइक गवर्नमेंट भी कहती है कि ये सब सर्टिफिकेशन लो एंड उससे एक बिलीव बना रहता है। अब मेरे हिसाब से जो ट्रेडट्रॉन है उसके पास 27001 होगा आईएसओ सर्टिफिकेशन, एज फार एज लगता है मुझे कि कुछ एक सर्टिफिकेशंस हैं जो कि होनी चाहिए। एंड लाइक आपका अभी मैंने वेबसाइट वगैरह एक्सेस नहीं करा, उसमें सर्टिफिकेशंस मेंशन करने होते हैं, आपने भी कर रखे होंगे, तो वो सब चीजें था एक कंसर्न मेरा। ये आपको हम एक तो एग्रीमेंट देंगे हम लोग, दूसरा चीज है कि वी विल बेसिकली सेंड यू बेसिकली कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमने ले रखे हैं, एक्सप्लेन यू। इट्स वेरी हाई अनलाइकली, मतलब बेसिकली कि आपका कुछ मतलब बेसिकली मिसयूज हो सकता है उसमें। बिकॉज मैंने ना भी एक प्लेटफॉर्म के साथ काम करा एंड उसमें ना मेरे को दिखा कि एक ब्रीच है, मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। तो तभी मैं ये सब क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसमें भी यही मिसमैच वाला फीचर था। ठीक है। अच्छा, सी बेसिकली देखिए, आपके क्रेडेंशियल जो सीक्रेट्स हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, वो डेटाबेस में इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होंगे, राइट? एसएसएल जो ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, एसएसएल जो है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर होता है जहाँ पे एवरी कम्युनिकेशन हैपेंस इनक्रिप्टेड, तो वो उसको हैक करना, इंजेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? और एपीआई सीक्रेट की जो है आपको सब्जेक्ट डालना ही पड़ेगा एक्सेस करने के लिए, और अगर कोई और एक्सेस करेगा तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे फेल हो जाएगा वो। ठीक है सर, लेट्स सी क्या कैसे होता है सब चीजें। आप एक बार थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देना और किसी फॉर्मेट में हो। अभी तो हमने एक डेमो देख लिया, लाइक हाँ कोई ठीक है, वेबसाइट या कुछ भी। ओके सर, थैंक यू। ठीक। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू। इफ हाँ, अगर किसी को कुछ नहीं है, वी कैन क्लोज द कॉल, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड ना फॉर टू गेट इट दिस, सो सर आपसे जी वन लास्ट क्वेश्चन, ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है और मोबाइल दिस इज अ बेस्ड प्लेटफॉर्म? क्लाउड बेस्ड क्लाउड। आनंद जी, नहीं मतलब इसका मोबाइल ऐप भी होगा या जस्ट डेस्कटॉप से ही एक्सेस हो सकता है? ये अभी डेस्कटॉप पे ही एक्सेसिबल है, आप मोबाइल पे भी इसको एक्सेस कर पाएंगे, मतलब ब्राउजर के थ्रू। ब्राउजर्स के थ्रू? ओके, ठीक है, थैंक यू। we can close the call, Anand ji, and if those are interested, na, we'll share a one Google form. Those who are interested, they can fill out that form. ठीक है, अच्छे से। Yeah. All right, thank you All everybody. right. Thank You, you, everyone. thank you. Any question, थैंक यू। let us know Ah, on the group, right? you can We ping try on to the group. answer those Yeah. questions. Yeah. Yeah. Thank you. Thanks, Akshay. Thanks, Thank Anand. you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.